बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रशिया ने एक मिलिट्री वीडियो रिलीज की है जिसमें रशिया ने एक नई किस्म के मिसाइल सिस्टम का अमली मुजाहिरा किया है। इस मिसाइल सिस्टम की ये सलाहियत है कि इस मिसाइल से दूसरे मिसाइलों, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट को तबाह किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के दिफाई हल्के ये सोच भी नहीं सकते थे कि रशिया खला में मौजूद अपने ही मिलिट्री सैटेलाइट्स को इस नए मिसाइल से तबाह कर सकता है। लेकिन रशिया ने ऐसा कर दिया। रशिया ने खला में मौजूद अपने डिफेंस सैटेलाइट को, जो कि जमीन के गिर्द 15 साल से अपने मदार में चक्कर लगा रहा था, इस नए मिसाइल से तबाह कर दिया। और तबाह होने के बाद इस डिफेंस सैटेलाइट के 1500 टुकड़े हो गए और इन टुकड़ों का साइज मोबाइल फोन के साइज जितना है। रशिया ने ऐसा करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 3400 एक्टिव सैटेलाइट्स को खतरे में डाल दिया है। अब रशिया किसी भी मुल्क के डिफेंस सैटेलाइट को इस तरीके से किसी भी वक्त तबाह करके उसके एयर डिफेंस सिस्टम और फजाइया की सलाहियत और ताकत से महरूम कर सकता है। इस वक्त खला में एक इंटरनेशनल खलाई स्टेशन काम कर रहा है जो कि साइज में तमाम सैटेलाइट से काफी बड़ा है, जिसके क्रू मेंबर्स में 2 अमेरिकन, 2 रशियन और 1 जर्मन शामिल है। जब रशिया ने अपने सैटेलाइट को तबाह करना था मिसाइल के जरिए, तो रशिया ने इस इंटरनेशनल खलाई स्टेशन में काम करने वाले क्रू मेंबर्स को महज 2 घंटे पहले वार्निंग जारी की कि हम अपने मिसाइल से अपने ही डिफेंस सैटेलाइट को तबाह करने लगे हैं और आप लोग अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लें। ये मिसाइल इस इंटरनेशनल स्टेशन के बिल्कुल करीब से गुजरना था। इस तरह 5 के 5 क्रू मेंबर्स इस खलाई स्टेशन के दूसरे हिस्से के कैप्सूल में मुंतकिल हो गए। नाज़रीन कराम, ये अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या है कि रशिया ने खला में अपनी बर्तरी को साबित करके पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। अब आप देखेंगे कि अमेरिकन स्पोक्स पर्सन किस तरीके से परेशान है और अपनी परेशानी का इजहार अपनी स्टेटमेंट में कर रहे हैं। The Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile against one of its own satellites. The test has so far generated over 1,500 pieces of trackable orbital debris and hundreds of thousands of pieces of smaller orbital debris that now threaten the interests of all nations. In addition, this test will significantly increase the risk to astronauts and cosmonauts on the International Space Station, as well as to other human spaceflight activities. Russia's dangerous and irresponsible behavior jeopardizes the long-term sustainability of outer space and clearly demonstrates that Russia's claims of opposing the weaponization of space are disingenuous and hypocritical. Outrage from U.S. officials after Russia carried out a missile test early Monday, firing an anti-satellite missile into space, obliterating one of its own satellites and creating a vast debris field that's now orbiting Earth, coming dangerously close to the International Space Station, which is currently carrying 4 U.S. astronauts. We were recently informed of a satellite breakup and need to have you guys start reviewing the safe haven procedure. The crew quickly putting on their spacesuits and taking shelter in one of 2 spacecraft docked at the station, which can return them to Earth during an emergency. अब आप नेटो के सिक्योरिटी जनरल को सुनेंगे कि नेटो फोर्सेस कितनी परेशान हैं और उनका दिफाई निजाम खतरे में पड़ गया है। So this was a reckless act by Russia to actually shoot down and destroy a satellite as part of a test of an anti-satellite weapon system. The satellites, the capabilities NATO allies have in space are extremely important for what is going on Earth. Communications, navigation, early warning, all of that is dependent on space capabilities. So of course when Russia now tests new space weapons, when they test it also by actually destroying a space capability, creating a lot of dangerous debris, that is concerning both because the debris actually poses a risk to civilian activity in space, but is also of concern because it demonstrates that Russia is now developing new weapon systems that can shoot down satellites. 30,000 space objects, anything larger than an iPhone, are being tracked with countless smaller pieces speeding around Earth.
the film Gravity dramatized a spacecraft being destroyed by debris from a Russian satellite explosion. In real life, the space station's Canadarm was pierced by debris this year. No serious damage, but proof that the risk is not science fiction. Space watchers are mystified by Russia's actions. Satellites are essential for communications, weather forecasting, and financial and global security. NATO is concerned Russia wants geopolitical leverage in space. To demonstrate that Russia is now developing new weapon systems that can shoot down satellites. Washington says it will work with allies to develop a response. Meantime, the US, Russia, and China are all building arsenals of anti-satellite weapons.